So yesterday were studying about we discussed about the basics of computer. Computer का introduction हम लोगों ने discuss किया था. कुछ computer के features भी पढ़े थे. Today I'll start with the next topic of your syllabus, that is the computer system. Computer system क्या है? Computer या computer system को mostly हम interchangeably use करते हैं, यानी कि हम computer को ही computer system बोलते हैं या फिर हम system भी बोल देते हैं. What is a system? कंप्यूटर सिस्टम तब है जब उसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन है. व्हेन इट रन्स तब वो कंप्यूटर सिस्टम है. So we have know that कि computer is a programmable device that can automatically perform a sequence of calculations and other operations on data once programmed for the task. तो कंप्यूटर सारे फंक्शंस हमारे कैसे करता है? Whatever the instructions we give, computer perform those tasks. वो किस तरह से सारे टास्क कर रहा होता है? On the basis of the instructions we have given by way of the programs जो हमने उसमें प्रोग्राम्स इंस्टॉल कर रखे हैं, उसके बेसिस पे कंप्यूटर जो है वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है. So obviously the functions of the computer are, we all are very aware that it store the information, it can retrieve the information. जो information आपने already store कर रखी है उसको हम फिर से use कर सकते हैं. We can retrieve from the system. Data is being processed, हम data process करते हैं, यानी कि we can do the calculations and on the basis of the instructions given in the computer. कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस तो दे रहे हैं, बट फॉर दैट वी मस्ट हैव द प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड इन दैट. फॉर एग्जांपल टैली का सॉफ्टवेयर अगर मेरे सिस्टम में नहीं है and I wanted to do the functions which are performed in the tally, obviously that cannot be performed because I haven't installed the program. ठीक है. So computer को हम यहाँ पे categorize basically किस तरह से किया जाता है, कितने तरीके कंप्यूटर्स होते हैं. We have digital computers, we have analog computers, we have hybrid computers. We will be discussing the types of computer in detail later on. First, focusing on the what is a computer system. A computer system is a computer combined with peripheral equipment and software so that it can perform desired functions. Again, as I said, कि computer आपका जो hardware है उसको जब हम connect कर लेते हैं software से, तब then only it is being able to perform the desired function which we want from the system, and that then it becomes a computer system. तब वो computer system कहलाता है. Fine. So one next is the types of computers. कितने तरीके के mainly computers हैं? We categorize the computers on the basis of the function it perform. The purpose हम अलग से भी categorize करते हैं. For the purpose we are using the computer and the functions being performed by the computer. Like laptops की अगर हम बात करें तो laptop हम सारे laptops होते हैं अलग से होते हैं. Why we say that a laptop? Because laptop has a specific function to perform. It doesn't matter which company it belongs to. किसका है that doesn't matter. But वो कुछ specific function perform कर रहा है, इसीलिए हम उसको desktop ना बोल के laptop बोल रहे हैं. हम इसीलिए इसको palm top ना बोल के laptop बोल रहे हैं. So on the basis of the functions performed, we categorize the computers. Basically we have the some of the computers जैसे कि mobile computers. मोबाइल का मतलब ही वो होता है कि जिस चीज को इजीली आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा सको. इजी टू हैंडल, दैट इज व्हाई इट इज द मोबाइल. तो अगर आपका स्मार्टफोन है तो वो भी मोबाइल है, ठीक है. लेकिन अगर आपका टैबलेट है तो वो भी मोबाइल है. एनीथिंग व्हिच कैन बी इजीली कैरिड, दैट इज द मोबाइल. Mobile computing is a human computer interaction by which a computer is expected to be transported during normal usage. यहाँ पे भी इन्होंने यही चीज क्लैरिफाई की है कि हम उसको मोबाइल कंप्यूटर कैसे बोलेंगे, that can be transported during the normal usage. Easily you can take it from one place to another. As it is can be easily carried, so we call it a mobile, and therefore we can change the location. They are portable, basically they are portable computers. कुछ examples इसके हैं जैसे कि हमारा स्मार्टफोन है, टैबलेट है, अल्ट्रा मोबाइल पीसी, and these are our mobile computers. Next come to our micro computers. Micro, as the name suggests, micro, small, relatively it is a small. So microcomputers are relatively inexpensive computer, yani as compared to your other computers, it is relatively comes in the cheaper cost.
दे इनकी जो क्वालिटी है या करेक्टरिस्टिक्स है वो है इट इज अ स्मॉल एंड सिंगल यूजर कंप्यूटर based on one microprocessor. So it is meant for a single user, though the multiple user can access a system. आपके लैपटॉप में कई सारे अकाउंट्स बन सकते हैं, अलग अलग लोगों को वो अपने अकाउंट से एक्सेस कर सकते हैं, but they are relatively small and they are meant to be used by a single user. And it is being used इसीलिए because they are meant to be used by a single user. So these computers are designed to be used by the individuals, the people, you and I. ठीक है, हम जैसे लोगों के लिए यूज करने के लिए बनाए जाते हैं. एग्जाम्पल्स वेरी कॉमन, हमारे जो पीसीज होते हैं, हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स क्या है, हमारा डेस्कटॉप या हमारा लैपटॉप, ये दोनों ही हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स बनाते हैं. हमारे पास लैपटॉप, नोटबुक एंड नेटबुक, these are the three terms which are commonly being used, जो काफी कुछ आपके लैपटॉप जैसे ही दिखते हैं पर अलग अलग नाम से बुलाया जाता है. लैपटॉप को हम अलग चीज है, नोटबुक इज अ डिफरेंट एंड नेटबुक इज अ डिफरेंट. How we categorize that? We categorize that on the basis of again the purpose they meant for, the functions they perform. Laptop क्या है? Obviously, you must all be aware that they come in a handy size ranging from the large briefcase sizes to the small handy portable. The size of the laptop varies. There is some laptops were little bulky and others are the quite handy. Notebooks are obviously they are the small in size and actually they are the size of the notebook. Fine. And netbook is also a kind of a, they are also a small in size with a portable device. Netbook and notebook में basically difference क्या है? The difference is of the purpose of the usage. netbook का मतलब क्या है? netbook हमारा इसका जो purpose है वो ये है कि to access the net, basically for the email and accessing the net we use the netbook. And notebook performs all the functions our laptop performs. There is a basically difference between the sizes and then processing capacity. Laptops are usually associated with a high processing power than notebooks, and normally they have 1 to 8 GB RAM. And your notebooks now, obviously notebooks जो आजकल आ रही हैं, they come in the laptop configuration also, and the size factor views of it has become more powerful and the sense of notebook is gone. So it is like the notebooks nowadays are available with the laptop configuration, so they have all the functions which laptop performs. Netbook comparatively lower speed है, and लेकिन again this is for the to access the network. Usage को देख लेते हैं, उससे आपका difference ज़्यादा clarify हो जाएगा. The main purpose, the primary use of your laptop is primary use is mobility and replicate the usage of personal computer with extra durability. Why do we use the laptops? We use laptops in place of our desktops. So please mute yourself. Symbol Fatima. Okay. So uses the purpose of your laptops. We use laptop in place of our desktop. Desktop का substitute की तरीके से use करते हैं, which is mobile, which can be carried easily. The main purpose of notebook is again the mobility, and there are also the like a personal computers. But the main focus of your netbooks is internet access. Hence, web browsing and email is a significant feature of your netbooks. Accessories, obviously their laptops are present in the different fashions, and these are the few of the accessories which can be associated with your different type of computers. And then we discuss the micro computers. अभी हमने माइक्रो कंप्यूटर्स की बात की और माइक्रो कंप्यूटर्स आपको क्लियर हो गया होगा, जैसे कि आपके डेस्कटॉप से आपके लैपटॉप से माइक्रो कंप्यूटर्स में आते हैं. और उससे पहले हमने मोबाइल कंप्यूटर्स की बात की, जैसे कि आपके स्मार्टफोन्स हैं, मोबाइल कंप्यूटर्स हैं. Then comes to the mini computers. Mini computers obviously larger in size, they're the mid-size computers, or they are basically इन्होंने बोला कि in size and power mini computers lie between workstation and mainframes. इनका purpose क्या होता है? The hundreds of users can work on the mini computers simultaneously, and it has a capability of multiprocessing.
मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ज्यादा बड़े हैं और बड़े हैं, दे आर लार्ज इन साइज, दे आर मोर एक्सपेंसिव एंड अगेन इवन thousands ऑफ द यूजर्स कैन वर्क ऑन दैट. जैसे जैसे आपका कंप्यूटर का साइज बढ़ रहा है, द फीचर्स बढ़ेंगे. एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल, they are quite powerful, and because we have the supercomputers, so we consider the supercomputer as the most powerful, but mainframes are also very powerful. And so these computers are capable of handling and processing the very large amount of data. Where we use the main computers, because they are huge in size, they are basically used in the large institutions and the government banks and the large corporations. Supercomputers, the fastest means of computer, they're the fastest computers, they're very expensive, they're employed in the specialized applications, particular scientific and defense sectors में काम करने के लिए use किया जाता है. या आप लोगों को मालूम होगा कि first time the computer being used in the defense sector. Later on, but they were the very bulky and very large और कमरे के size के हुआ करते थे. Then फिर उसके बाद उसको allow किया गया public use के लिए and compact होते चले गए. Supercomputers are very powerful and hundreds, millions of actions can perform in a minute. So these are the supercomputers. Then basic computer configuration. Computer configuration क्या होता है? When you purchase any computer, जब हम खरीद रहे होते हैं, तो we go for the configuration. हम उसका configuration check कर रहे होते हैं, यानी कि what is its speed of processing data, memory कितनी है, storage capacity कितनी है. So these things comes under the computer configuration. Then all the settings and kinds. Main topic was the types of computers. I'm focusing on that right now. अभी तक हमने computers को categorize किया on the basis of size. Now, on the basis of size, like हमने बोला mobile computers हैं, then micro computers हैं, then mini हैं, mainframe computers हैं, then we have the supercomputers. Now we categorize the computer on the basis of the functions they perform. So on the basis of the functions, we divide the computers into the analog computers, digital computer, and hybrid computer. What are the analog computer? Analog computers are used to process the analog data. So obviously analog data क्या होता है? This is continuous data, continuous nature का data है. Function perform करने के लिए, analog function को perform करने के लिए computers को use किया जाता है. Examples are temperature, pressure, weight, speed, voltage, depth. इन सब के लिए हम analog computers use करते हैं. They have a finite variety of values and they are continuous in nature, इसलिए इनको analog बोला जाता है. ये analog signals पे काम करते हैं. Digital computers, they work on digits, they work on numbers. Numbers कौन से? Basically 1 and 0. Numbers are on का मतलब on and off mode पे काम कर रहे होते हैं. They operate on the on and off type. So on means 1 and off means 0. So they work on the 1 and 0 digits. So what is the function of these? The function of the digital computers is to process the numeric data. जितना भी हमारा data है उसको numeric और अगर non numeric है तो उसको numeric में convert करके ये digital computers उसको process करता है. Now there comes the hybrid computer. Hybrid का मतलब ये होता है combination. We combine, जहाँ पे हमने digital computer और analog computer दोनों को combine कर दिया. तो दोनों को combine कर दिया तो these type of computer has the both the benefits. यानी कि it has the speed of analog computer and it has the accuracy of digital computer. So here we hybrid computers are a combination of your analog computer and your digital computer, and it has both the qualities. So they are specialized in dealing with both types of data, whether it's an analog data or it's a digital data, and so it helps the user to process the both continuous and discrete data. अगर डेटा डिस्क्रीट कंटिन्यूस नहीं है तो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर, हमारा एनालॉग कंप्यूटर उसको वर्क नहीं कर सकता. अगर डेटा डिजिटल नहीं है तो हमारा डिजिटल कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता, उसको डेटा डिजिट्स में चाहिए. बट हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर whether your data is the discrete or your continuous data, the hybrid computers are being used. I hope the types of computer must be clear to you all. Now coming to the computer operations. Before coming to computer operation, I just want to repeat one more time. We have just studied what is the computer system so far.
So I said कि computer system is a set of the peripheral devices and the software, hardware and software. Because due to this only computer is being able to process the information which we have given the computer to do. Computer जो functions perform कर रहा है वो तभी कर पाएगा. That is called the computer system. Then we come to the types of computer systems. कितने तरीके के computer systems हमारे पास है. Computer system में first we divide the computer on the basis of size, and then we divide the computer on the basis of the function computer perform. Now coming to the computer operations, the basic operations which are being performed by the computer. Computer कौन से basic functions करता है? The basic first is input, then process, then output, then storage, and then computer operations. Fine, storage device, and then last में आपका memory आ जाएगा. Just take it one by one. What is input? Input is anything which we put into the computer, and we get the information on the basis of the input we have given to the computer. Input the instructions which are given to the computer. जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर उसी के अकॉर्डिंग उसे प्रोसेस करेगा और हमें रिजल्ट देगा. So it is a process of capturing or acquiring the information, or it is a process of accepting the data or the information. So जिस भी मेथड से जिस भी मीडियम से कंप्यूटर को हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं दैट इज कॉल्ड द इनपुट. अब थ्रू द इनपुट डिवाइस के हेल्प से हम क्या करेंगे, वी एंटर द इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर. जो हमारे इंस्ट्रक्शंस है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है दैट वी वांट टू शेयर विद द कंप्यूटर, वी पुट इन with the help of the input device. So it can be both manually and automatically. What are types of the input? Computer को हम कितने तरीके के input देते हैं? What kinds of input we give to the computer? First is we provide the data. We provide some data. Data we discussed yesterday also. What is the data? Data is the raw facts. Data doesn't have any meaning itself. Data का अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होता जब तक हम उससे कुछ परफॉर्म करके कुछ इंफॉर्मेशन ना फाइंड आउट कर लें. Yesterday I have given you the example of the information and the data. For example, you have the data of the income and expenses of the company. What are the incomes and what are the expenses of the company? That is the data. When you put that data into the income and expenditure account, and we get some information that obviously the income is more than the expenses, or the expenses are more than the income. This is the information. So we derive the information out of the data. So first type of input is the data. We provide the raw information to the computer. Okay? Why do we provide that? Because we need some meaningful result out of that. Programs. Programs is also the input. What is the program? Program is a set of instructions. Program are the set of instructions which are being performed by the computer, or we can say that the programs direct the computer to perform the specific task. कंप्यूटर को कुछ काम करने के लिए हमें प्रोग्राम्स की जरूरत होती है. देन कमांड्स क्या है? कमांड्स वी प्रोवाइड द कमांड ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्यूटर गिव द इंस्ट्रक्शन. फॉर एग्जांपल अगर आप एंटर करोगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग कमांड मिलेगा. आपने डिलीट कर दिया, यू हैव गिवन द कमांड ऑफ डिलीट, तो वो डिलीट करेगा. फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया एंड देन आई जस्ट पुट द बोल्ड, मैंने बोल्ड किया तो मैंने कमांड ये दिया कि बोल्ड, सो हमारे पास बोल्ड आ गया. एंड अगर मैंने कमांड ये दिया कि हाईलाइट हो जाए तो वो हाईलाइट हो गया. दिस आर द कमांड. स्पेशल कोड्स और द कीज और द कीवर्ड दैट द यूजर इनपुट टू परफॉर्म अ टास्क. यूजर जो भी लाइक आई हैव शोन यू कि इस तरह से जो भी हमने कमांड दिया, आई हैव गिवन दिस कमांड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड कंप्यूटर परफॉर्म्स द टास्क अकॉर्डिंगली. User response, the user's answer to the computer's question. User response is also an input, and जिसे कि उन्होंने बोला कि it is a user's answer to the computer. Anything is being asked by the computer. अगर किसी भी काम करने के लिए कंप्यूटर जो हमें पूछ रहा है और हम जो उसके accordingly response कर रहे हैं, that is called the user response. So this was the input. The second function being performed by your computer is the processing. With the help of the input, we have given some information to the computer. We have given some instructions to the computer. Now it's time for the computer to process that data. यानी कि उस चीज को वो ट्रांसफॉर्म करे, उस इनपुट को वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करे. कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा? सिस्टम कंप्यूटर हमारा डेटा को प्रोसेस करेगा.
आपको कोई मैथ्स का क्वेश्चन सामने मिलता है एग्जाम में, अकाउंट का क्वेश्चन मिलता है, तो क्या होता है, द क्वेश्चन इज बीइंग गिवन टू यू बाय द एग्जामिनर, इनपुट मिला, तो योर ब्रेन स्टार्टेड प्रोसेसिंग दैट, अब उसको सोचना स्टार्ट करते हो कि इसमें क्या करना है, हाउ टू कैलकुलेट, दैट इज द प्रोसेस, एंड देन यू राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक, दैट इज द आउटपुट. Similarly, now you have provided the input to the computer, now computer will process that. What is the processing? It is the transformation process to convert the input into output. The input, the values you have given, the instructions you have given to the computer. So in order to provide the output, you need to process that. जैसे कि हमने भी बात की कि अगर कोई सवाल इम्तिहान में आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो उसका आंसर कॉपी में लिखने से पहले आप सोचते हो ना कि अच्छा इसमें these were the points. So you process that. Computer also process your input to convert that input into the output. So process is an instance of running a program. So computer runs its program. It calls the computer to follow the instruction from the memory. Computer has a memory and it has certain set of instructions. Computer follow those instructions and drive out the output out of the instructions you have given. अब ये जो कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग की, जैसे कि हमने बोला कि we got the question in the examination, then we started thinking what to do and what to write, and then we started writing. So हमने बोला कि हमारे ब्रेन ने प्रोसेस किया, किस हिसाब से प्रोसेस किया, the information which are stored in our brain, भाई obviously जितना हमने पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग तो आप प्रोसेस करोगे. हमने सिमिलरली वही बोला कि कंप्यूटर को हमने इंस्ट्रक्शंस दिए तो कंप्यूटर विल प्रोसेस दैट on the basis of the information stored in its memory, ठीक है, to give you the output. So where this function being performed, कहाँ पे ये processing होगी, ये processing होगी CPU में. CPU क्या है, it is a central processing unit and CPU is also known as the brain of the computer. CPU has three parts. It has one is the ALU, that is arithmetic logical unit. Then we have the control unit and we have the input output unit. अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करती है, ये सारे कैलकुलेशंस करती है. योर ब्रेन आल्सो हैव द पार्ट्स and your parts of brain, different parts of brain has a specific task to perform. Similarly, the computer has a brain CPU and it too has three parts to perform the specific task. It has the arithmetic part, yeah, logical unit. ALU performs all the logical decisions, all the calculations. आपका कंट्रोल यूनिट क्या होता है, इट्स लाइक अ पुलिसमैन हु कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन, लुक्स आफ्टर ऑल द फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है. And then you have input output unit to take the instructions and give out the results. So here again they have mentioned about these units, like the arithmetic logical unit क्या होता है, the part of computer that performs all the arithmetic computations such as addition, multiplication, all the comparison. कंप्यूटर का वो पार्ट जो सारे कैलकुलेशंस कर रहा है वो अरिथमेटिक है या अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है, ALU. Then the computer has a control unit. Control unit is a circuitry that controls the flow of data through the processor and coordinates the activities of the other units within. कंप्यूटर के सारे पार्ट्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर प्रोसेसर से फ्लो हो रही है उसे कंट्रोल करना. कंट्रोल यूनिट assures that everything being take place according to the desired, what is being desired, ना रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब चीजें काम करनी चाहिए, कंट्रोल यूनिट मैनेज करती है. Then computer has input output unit, the computer components that control the input and output devices. Fine, ये कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करेगा. And when the information being transformed after the processing, it helps to giving out the result, and anything which is comes out of the result due to the output, we input output manage करना. They are the again, because here we are discussing about the input output unit, so you must also be knowing कि how do we get the output. कंप्यूटर में जो भी हमारा रिजल्ट होता है, जो भी आउटपुट मिलता है, it can either be the hard copy or the soft copy. हार्ड कॉपी के फॉर्म में अगर आपको आउटपुट मिलेगा तो यू विल टेक इट आउट इन अ प्रिंटर, आप प्रिंट में प्रिंटर से निकाल लोगे, यानी प्रिंटेड कॉपीज निकाल लोगे. सॉफ्ट कॉपी क्या है, इट कैन बी इधर डिस्प्लेड ऑन योर मॉनिटर, मॉनिटर पे जो रिजल्ट दिख रहा है दैट इज अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ द रिजल्ट, द इंफॉर्मेशन व्हिच वी वांटेड. और we can also save that information in your system. We can copy that information to your pen drive or anything. You can
send it to some other buddy through the email, तो वो सॉफ्ट कॉपी हो गया. हार्ड कॉपी ऑब्वियसली द प्रिंटेड फॉर्म जितना भी होता है वो सब हार्ड कॉपी होता है. Then computer perform the function of storing function, very important function. Computer को सिर्फ output provide कर देना ही is not only sufficient. Computer has an amazing storage capacity. A large amount of data can be stored in the computer, so the computer perform this function. Storing की जब बात होती है तो computer has already inbuilt storage capacity also. Besides that, we have if we have the excess of the data, we have some external storage capacity also. So storing की हम बात करते हैं तो there is some primary storage capacity, primary, and there is some secondary sources of storing data. इनबिल्ट जो हमारे पास स्टोरिंग कैपेसिटी है कंप्यूटर की वैरी करती है सिस्टम टू सिस्टम, जिसमें कि जो भी चीज़ है वो कंप्यूटर में सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है, कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हो जाता है, इसे हम कंप्यूटर की मेमोरी भी बोलते हैं. एंड जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जिसमें कि आपकी हार्ड नॉट यू कैन आप अलग से हार्ड डिस्क लगा सकते हैं. यू हैव अ पेन ड्राइव, you have a CD, you have a DVD. So in this way, you can store the information of the computer in external devices also. And then controlling, the one more function of the computer is the controlling. It is the process of directing the manner and sequence in which all the operations are to be performed. Look, so important this function is. It is not only important to perform the function, it is very important to perform all the functions in a sequence. जिस सीक्वेंस में फंक्शन होना चाहिए वो उसी सीक्वेंसिंग में हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो उसी मैनर में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमारा कंट्रोल जो कंप्यूटर का है वो मैनेज करता है. इफ एनीथिंग नॉट बीइंग कंट्रोल्ड, अगर अगर कोई भी चीज मैनेज ना की जाए तो क्या होगा, सब चीजें हैफजर हो जाएंगी. आपके घर में जो आपके पेरेंट्स होते हैं उनका काम होता है टू वर्क एज अ फंक्शन द कंट्रोलिंग. कौन सी चीजें कैसे होनी है, किस सीक्वेंस में होनी है, कब क्या करना है. So obviously for due to that reason your home works successfully, यानी कि your home functions smoothly. Similarly in your university we have the administrative unit. The administration university का क्या करता है, administration ensures that all the things being taken place in the correct manner and in the sequence of the manner. So if this control unit doesn't work properly, so everything will be haphazard and will not be able to get the desired output. So for today, this much is sufficient. If you have any query and the question, you may please ask. Any of you, if you have any query and any question so far,